Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear friends. I am your host Nazir Hussain Lashari and you are watching Science by Nazir YouTube channel. Dear friends, जो PST और JST की तैयारी काफ़ी दिनों से चल रही है हमारे चैनल पे, तो अगर हमारे चैनल आपने विज़िट नहीं किया तो चैनल विज़िट करें तो उस कंप्लीट कोर्स इंशाल्लाह आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। उसकी अलग प्ले लिस्ट बनी हुई है, तो आप देख सकते हैं और देखें ताकि आपका फ़ायदा हो सके। तो उसकी लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। जो क्लास 8 के साइंस के जो 3 लेक्चर्स मैं अपलोड कर चुका हूँ, ये मेरा चौथा लेक्चर है अबाउट 8 क्लास साइंस। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 8 में इस वीडियो में 8 से आगे जो है वो मैं आपको बताऊँगा। चैप्टर नंबर 8, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वान्टिटीज़। द वर्ड मेजरमेंट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड मेट्रॉन यानी लिमिटेड प्रोपोर्शन। उसके बाद यूनिट्स हुज वैल्यू डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर यूनिट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। यूनिट्स हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन अदर यूनिट्स आर कॉल्ड ड्राइव्ड यूनिट्स। 7 बेसिक यूनिट्स किलोग्राम, मीटर, सेकंड, केल्विन, मोल, एम्पियर एंड CD कैंडिला आर इंक्लूडेड in which system? SI system. Foot, pound and second units are included in FPS, foot pound second system. उसके बाद सेंटीमीटर्स, ग्राम्स एंड सेकंड यूनिट्स आर इंक्लूडेड इन CGS system. मीटर, किलोग्राम एंड seconds units are included in MKS system. When it was implemented in all countries that SI system of unit be used 1960. उसके बाद 7 बेसिक यूनिट्स एज फॉलोस। मास का जो यूनिट है वो किलोग्राम है, लेंथ का यूनिट जो वो मीटर है, टाइम का यूनिट सेकंड है, टेम्परेचर का केल्विन है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडिला, जो मैंने आपको पहले भी बताया। उसके बाद विच आर यूज टू फॉर्म डेसिमल मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ SI यूनिट्स प्रीफिक्सेस। क्यूबिक मीटर इज अ यूनिट ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ तो मैं आपको बता देता हूँ। चैप्टर नंबर 9 हमारा स्टार्ट हो रहा है, सोर्सेज एंड इफेक्ट्स ऑफ हीट एनर्जी। Increase of the size of a body due to change in temperature is called thermal expansion. उसके बाद decrease of the size of body due to change in temperature is called thermal contraction. All 3 states of matter expand upon heating. All 3 states of matter contract upon cooling. Which liquid is used in clinical thermometer? Mercury is used. ठीक है, चैप्टर नंबर 9 completed. चैप्टर नंबर 8 started. Lenses. How many types of lenses are there? 2 lenses, convex and concave. A convex or converging lens is curved outward on both sides. 169. A concave or diverging lens is covered inward on both sides. The center of a lens is called optical center. A line that bisects lens into 2 halves is called vertical axis. The distance between the optical center and principal focus is called focal length. A person who can focus clearly on distant object but can't focus on near objects is called long-sightedness. Long-sightedness defect can be correctly by wearing a convex lens. A person who can focus clearly on near objects but can't focus on distant object is called, उनको क्या कहेंगे? शॉर्ट साइटेडनेस. शॉर्ट साइटेडनेस डिफेक्ट कैन बी corrected by wearing a concave lens.
तो हमारा चैप्टर नंबर 10 कंप्लीटेड, चैप्टर नंबर 11 स्टार्टेड। इलेक्ट्रिसिटी इन एक्शन, AC stands for alternating current. Solar cells are also called photovoltaic cell. सोलर सेल्स जो सोलर प्लेट्स होते हैं उनको दूसरा नाम क्या देंगे? फोटोवोल्टेक सेल्स। विच इज़ ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी, बायोमास। DC stands for direct current. The current which flows in one direction is called direct current. उसके बाद a group of diodes which convert AC to DC is called rectification. उसके बाद CPU stands for central processing unit. IC stands for integrated circuit. Exploring space. What does tele and scope mean? Tele means distant and scope means to see. How many types of telescope are there? There are two types of telescopes, a refracting and reflecting telescope. A telescope that uses lenses is called refracting telescope. A telescope which uses mirrors is called reflecting telescope. उसके बाद an optical instrument used to measure the properties of visible light is called spectroscope. A vehicle sent into space to carry out a specific task is called spacecraft. ISS stands for International Space Station, which was first spacecraft landed on the surface of Venus in 1974 by Soviet Union. वो क्या है? Venera 9. Which spacecraft landed on surface of Mars? Opportunity rovers. MRI stands for magnetic resonance imaging. CT stands for computed tomography. A science of obtaining information about objects on Earth from space by using satellite is called remote sensing. Which twin brothers spent a year on ISS in space to study long-term space travel effects? Mark Kelly and Scott Kelly. SLF stands for Satellite Launching Facility. GPS stands for how many satellites? More than 30. Which lunar command module took humans to the moon? ठीक है, तो ये आपने देखा और पढ़ा, आपको यकीनन समझ आ गया होगा कि आप याद किया होगा। अगर याद नहीं हुआ तो याद ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। यहाँ पे हमारा ये जो है वो चैप्टर क्लास 8 साइंस जो थे वो कंप्लीट होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊँगा वो सिंधी के कुछ MCQs हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपको दे दूंगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने लगे, काफ़ी दोस्तों तक पहुंचना लाजिम है। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह ने के बाद, थैंक यू।